So we will start with logic gates. Logic gates are of two types. First one is basic gates and second is derived gates, right? That part I think we have done. So I'm just revising. So we have three basic gates. What are those basic gates? We have OR gate, AND gate, and we have NOT gate. These are three basic gates, and derived gates you can derive from these basic gates, like NOR gate. NOR is basically the combination of OR plus NOT. Then we have NAND gate. NAND gate is basically combination of AND plus NOT. And then the last gate is XOR, exclusive OR gate. And this is also represented XOR, and it is a combination of all three gates, OR gate plus AND gate plus NOT gate. All three gates we have to use to design one XOR gate. So we will start first with OR gate. So before starting with, in the last class we have done what are the things which we need to write for each gate. First one is its logic statement. It is basically the statement or the definition of your gate. Okay, when will be the output high. So you have to write the statement for high output. That is your logic statement, or simple you can say definition. Then you have to write about the truth table. So what is truth table? Here it is basically you have to write the output for all possible input combination. So in last class we did two input truth table we have done. We have already done three input table. So you have to use this formula, 2 raised to power n is equals to m, where n is your number of input and m is your all possible combinations with the help of this input. So if you have two, then you will have four combinations in your truth table. तो हम ये जितने भी gates करेंगे ये सब हम mostly two input वाले ही करने वाले हैं. Then you should know the symbol of that particular gate. And the fourth one is its Boolean equation. The equation आपको पता होना चाहिए Boolean equation. So that four things you have to write for each and every gate. So we will first start with OR gate, right? We will start with OR gate. So in OR gate, so what is the definition of OR gate or logical statement? The logic statement is basically when you have any of the inputs and all the inputs are high, then only the output is high. Okay. When you have any of the input or all the inputs are high, then only the output is high. So equation क्या होगी? Boolean equation for this, y is equals to a plus b. Now this plus is not like your addition, ठीक है? Or operation है either this or both. Either this high or this high or both are high, then the output is high. Addition, binary addition कैसे होती है? I will explain that part also, because in number system you have that binary addition, but that chapter is also going on. The addition is basically you have to follow certain rules like 0 plus 0. Just like in your decimal addition, आप 2, 3, 5, 1, 3, 8 इस तरह से अगर आप addition कर रहे हो तो you have to start from here. So 8 plus 5 कितना हुआ? 13. That carry will go here. 3 plus 3, 6, 7. Then 2 plus, अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 plus 1, 10. तो जो last carry है आप यहाँ पर देखते हैं. So in binary also you have to follow certain rules for addition. I'm just giving here the difference. What is the addition and what is OR gate? Because many students are doing this mistake. OR की जगह addition कर देते हैं. So 0 plus 0 is basically 0. And 2 plus 1 is 0 plus 1 is
1. Then we have 1 plus 0, again it is 1. But when both the numbers are 1, then your uh, number is 10, where 0 you will write as sum and 1 you will take it as a carry for higher order bit. And if you have 3 plus 1, ठीक है, तो 1 plus 1 हमने देखा यहाँ 10 होता है, and when you add 1 over here, so this will become 11. So sum is also 1 and carry is also 1. These are the rules for addition. So if you are adding some binary numbers like this, तो अगर आप इनको add कर रहे हो तो you have to follow these rules that is there in your number system. 1 plus 1 10, this is carry. 1 plus 1 कितना होता है 10, 0 you will write here and 1 you will write here. So 1 plus 1 again 10, ठीक है, carry is there. So again you will add 1 plus 0 1 and again 1 plus 1 10. Again here, now it is 1 1 1, 1 1 1 is 11. So last carry you will write along with this. So this is binary addition. But what is OR operation? OR operation में what is the difference? यहाँ के जो first three, I'll write the truth table for OR gate. So कैसे बताया था truth table? This should be alternative and here two zeros and two ones. Okay. So the a Boolean equation is A plus B. So how you will write this? So 0 or 0, 0. 0 or 1. Here I am using plus, but here plus is OR. For OR operation, you will read 0 or 1, 1. 1 or 0, 1. 1 or 1, 1. So this is the difference. 1 plus 1 here it is 10, but in case of OR gate 1 or 1 is 1. तो जो एडिशन में बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, एडिशन और OR ऑपरेशन सेम समझ लेते हैं. But here if now you can define OR gate, you can write the logic statement. Logic statement किसके लिए लिखना होता है? Logic statement you have to write for high output. So high output कब है? When any of the input is high or all the inputs are high, output is high. So this is basic definition of OR gate. OR gate का क्या definition है? When any of the input from your combination of inputs, if any of the input is high or all the outputs, inputs are high, then output is high. और addition में क्या difference है? जो लास्ट वाला एंट्री है when both the inputs are high then output is high here, but here it will be zero sum and there is no carry in OR gate, but यहाँ पर जो carry part है that will transfer to higher order bit. So this is addition and this is OR operation. तो first three entry same देखते हुए student last entry में भी यहाँ zero डाल देते हैं. वो वाला वो भी gate है. लास्ट गेट जो है हमारा एक्सक्लूसिव OR गेट विच हैज मेनी एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन, वहां पर यहाँ जीरो आता है. तो XOR गेट कैन परफॉर्म एडिशन, OR गेट इज डिफरेंट. Understood? Now in your RD Supekar, one implementation is there for OR gate. Okay, you have one LED. This is symbol of LED. Okay, here light is emitting. आपने देखी होंगी डेकोरेटिव लाइट्स में LEDs रहती हैं, light emitting diode. So if I connect with supply over here, okay, this is let's say plus 5 volt DC supply. Now I want to connect two switches. ठीक है, ए और गेट के जो इनपुट्स हैं दिस विल बी कंसिडर्ड एज टू स्विचेस. उनको इस तरह से सर्किट में कनेक्ट करना है आपको कि दिस विल ग्लो अकॉर्डिंग टू द आउटपुट ऑफ द और गेट. मतलब ये कब कब ग्लो करना चाहिए? जब ये स्विचेस इन पोजीशन पे हो, और जब स्विचेस दोनों ऑफ हो या ओपन हो देन एलईडी शुड नॉट ग्लो. तो स्विचेस को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इधर वी कैन कनेक्ट इन सीरीज, तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ए एंड बी, और इधर वी कैन कनेक्ट इन पैरेलल. You all know about series and parallel combination.
Registers में आपने 10 standard तक you have already done. So here current divide, ठीक है, and here the same current will flow. So which pattern I should connect here to operate OR operation? This is my OR gate. So I should connect in series or I should connect switches in parallel so the LED will glow according to the output of OR gate. This is just for like it is just for fun you can say कि आपको कैसे एक LED को ऑपरेट करना है with according to OR gate. So can anybody tell if I should connect in this manner here or I should connect switches in this manner? Which is the right one? This is series combination. par par Very good. Parallel one. Yes, very good. Parallel में you need to connect your switches. Correct? So this way you can connect switches in parallel. So you can see also, see current will flow from here. Okay. So when both the switches are open, then in parallel you will have two paths. Either the current can flow from here or it can flow from here. Okay. So when both the switches are open, then both paths are not complete and no current will flow. Output will be 0. But if any of the switch is connected, let's say here 1, so means B switch is closed. So current will get the path and it will flow and this is current will always flow in closed path. ठीक है, तो current flow करेगा, LED glow करेगी and this will work. And when it is switch A is closed and B is open, then current will take this path and LED will glow. And when both are closed, ये भी बंद है और ये भी closed है, तो current will divide and again it will combine and LED will glow. So to implement OR operation or to perform LED in OR operation manner, switches or the inputs of input or you can say switches should be connected in parallel. Understood? So this is about OR gate. So this is just like addition, but it is different from addition. In addition, the last option is 1 0. Here the last option 1 1 is 1. That is the basic difference between OR gate and addition we can perform with the help of XOR gate. आगे जब हम combinational circuit start करेंगे. Clear हो गया ये? तो next जो हमारा gate है that is AND gate. Okay, next gate is AND gate. So AND gate का जो okay, one more thing for OR gate, you should know the symbol. Three things so we have done. We have done the definition, we have done Boolean equation, we have done truth table, and this is symbol arrow type. जैसे bow and arrow में arrow रहता है ना, this is the symbol. Here you are having two input and this is your logical equation A plus B. So this way you can represent your OR gate. तो कहाँ कहीं पे भी आपको OR gate explain करना है, तो we will not use transistors, registers to show. We have symbol just like for register you have this symbol, for capacitor you have this symbol, for inductor you have this symbol. So same way all 6 gates they are having their own symbols. तो उन symbols को हम use करेंगे to design combinational circuits. Okay. Now the next is a AND gate. So first we will draw symbol only. तो symbol कैसा रहता है, आइसक्रीम जैसे रहता है ना शेप आइसक्रीम का, वैसा. So this is your AND gate. Here you are having two inputs A and B and this is your output. So logical equation इसकी है, it is a dot operator, A dot B, simple multiplication. Okay, so how to draw truth table for this? So you are having two inputs, so how many combination? I'm repeating this again and again so that it will be in your mind. Practice हो जाए आपको. Truth table, so two input, so you have how many combination? 2 raised to the power 2, 4. 2 raised to the power n is equals to m वाला formula. Always you have to you should know क्योंकि आगे marks remarks में भी we will use that formula. 0 1 0 1, then 2 zeros and 2 1, and output equation is A dot B. So this way you can design truth table. So in truth table 0 into 0 0, 0 into 1 1, 1 into 0
sorry, 0 into 1, 0, 1 into 0, 0, 1 into 1, 1. So what will be the definition or statement for this? The statement you have to write for high output. So when all the inputs are high, then only the output is high. If any of the input is low, output is low. तो इसका definition high output के लिए क्या बनेगा? When all inputs are high, then only the output is high. क्लियर? सो डेफिनेशन हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया, इक्वेशन हो गया, सिंबल हो गया. अभी स्विचेस जो हमने और गेट के लिए किया था, दैट सेम यू हैव टू डू फॉर एंड गेट. तो आई शुड कनेक्ट इन सीरीज और इन पैरेलल. Series. Very good. So both the switches should be connected in series to operate LED in AND gate form. So here A and B, two inputs are there. So when both are open, then current will not flow. If any of the one, if any one is closed, like B is closed, then also the part is not complete. 1 0 hai, so this is closed and this is open, then also the part will not complete. And when both are 1 1, then output is high. Means when both are closed, then current will flow and LED will glow. So this way you can operate LED with the help of or like AND operation or like AND gate by connecting switches in series. Okay, so this is your second gate AND gate. Now the third gate, third basic gate is NOT gate. So NOT gate, अभी आपने शायद वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में नहीं किया होगा. तो किया नॉट मैम, इज आज ही किया. आज ही किया. ओके, वेरी गुड. So inverter, it is also called inverter and it is used to perform ones complement. So ones complement क्या करता है? It will invert the digit. Mean when you have 0, it will become 1 and when you have 1, it will be 0. So this is your NOT gate. Okay. तो नॉट गेट क्या करता है? वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करता है. इट विल परफॉर्म वंस कॉम्प्लीमेंट. तो symbol first you should know. This is symbol triangle and with bubble and it has only one input. ठीक है ना? Other gates can have two inputs or more than two inputs, but NOT gate has only one input. So you have only one input and equation is represented with bar. ठीक है ना? वंस कॉम्प्लीमेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बार से. ऊपर बार लगाना पड़ता है. So this will show that it is inversion. So if you are giving 0 over here, then 0 का invert 1 at it. And if you are giving 1 over here, 0 will come. Understood? So this is about NOT gate. तो NOT gate का truth table में कितने combinations बनने चाहिए? Since we have only one input, तो 2 raised to the power 1, only you will be having two inputs, either 0 or 1. And y is equals to a bar. Clear? So when you have 0, so your output should be 1 and when you have 1, output should be 0. So now same NOT gate you can how to implement or how to operate LED according to NOT gate. So again you have one uh, power supply and LED. ठीक है. तो अब जो है कैसे मुझे सर्किट में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा? सिंस आई एम हैविंग ओनली one switch, so I should connect here in series or I should connect here in parallel. How should I connect? This is series. If I put here, ऐसे यहाँ पर switch लगा दूँ तो this will be series और यहाँ पर लगाऊँ कि this will be in parallel. So which combination I should connect over here? Hmm? Series or parallel? It should be parallel. How? See. स्विच क्लोज हो जाएगा तो फिर करंट नहीं जाएगा एलईडी. Yes, क्योंकि when it is open, then whole current will flow through this part and LED will glow. But when it is closed, so wire जो है it has very low resistance. The whole current will flow from this. और जो इसका डायोड जो है उसको जो है negligible current यहाँ पे मिलेगा and the LED will not glow. So when it is 1, when it is closed, so it has very least resistance or zero almost resistance and the whole current will flow from this
and no current or very small current which is not sufficient to glow LED. So this will become 0. तो नॉट गेट के लिए आपका स्विच जो है एट दिस शुड बी पैरेलल टू एलईडी. Clear? So that is about NOT gate. So we have done all basic gates, OR gate, AND gate, and NOT gate. Now the third one is, now next is derived gates. We will start with derived gates. Okay, so next three gates we will do derived gates. Derived, which as its name is saying, it is derived from basic gate. So first we will learn about NOR gate. तो NOR gate क्या होता है? It is basically combination of OR plus NOT gate, right? तो OR gate क्या symbol क्या होता है? That is the symbol for OR gate. It has two input, and what is its equation? A plus B. Okay. So if I pass this output as a single line to NOT gate, if I pass it through this NOT gate, then it will become what? A plus B ka bar. So this is logic equation of NOR gate. This is logical equation of NOR gate. Understood? Now you can write truth table easily for this. Truth table you can write easily. So this is 0, 0, 1, 1. This is 0, 1, 0, 1. Now you only tell क्या होना चाहिए? और का inversion है. So this will be 0 plus 0, 0 और उसका invert. Very good. For this second entry, 1 plus 0 is 0. And this one is also 0. And this one is also 0. So this is truth table for NOR gate. So how you will write the statement? Statement is when all the inputs are high, then only the output is high. When all the inputs are, when all the inputs are low, then only the output is high. Now, how to implement this with the help of that LED को how you will operate through NOR gate? तो कैसे connect करना चाहिए? This is your supply and this is your LED. तो अभी हमने और को तो देखा था, और में switches are connected in parallel and not में switch is connected across the LED. तो combination कैसा होना चाहिए कि जो switches हैं that should be parallel to each other, right? They are parallel to each other, A and B, and this parallel combination should be parallel to your LED. So this will work. और नॉट का यू नो, और में क्या होते हैं? बोथ आर पैरेलल. ठीक है ना, हमने यहाँ लगाया था. बट नॉट को भी देखना है, तो नॉट हमारा पैरेलल में है एलईडी. क्लियर? तो नाउ इट विल वर्क. यू कैन चेक व्हेन बोथ आर ओपन. अगर ये ओपन है दोनों, तो होल करंट विल फ्लो फ्रॉम एलईडी एंड दिस विल ग्लो. बट इफ एनी ऑफ दिस स्विच इज क्लोज, अगर लेट्स से 1A क्लोज है, तो करंट को ये पाथ मिल जाएगा and the whole current will flow through this A switch. Okay, same one for this, it will flow through B switch, and for 1 it will divide here and again, means LED के पास नहीं जाएगा. So this is about NOR gate. Understood? Now the next gate is NAND gate. NAND gate is basically the combination of AND plus NOT. इसका सिंबल भी बना लो और का सिंबल जो है नॉट का सिंबल जो है सेम और बनाओ, और नॉट का सिर्फ बबल इसके आगे लगा दो. तो दिस इज द सिंबल फॉर नॉट गेट. अंडरस्टूड? सिंबल फॉर नॉट गेट इज और का और बबल लगाना है नॉट का. तो दिस विल बी योर नॉट. ऐसे ही एंड नॉट. तो एंड गेट क्या है? दिस इज योर एंड गेट and this is your NOT gate. Clear? So A and B, and here what will be the equation of AND A dot B?
और जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बिकम a डॉट b बार. तो you will write y is equals to a dot b bar. This is your equation. Understood? ठीक है. So you can write truth table also. A b a dot b bar. This is your truth table. तो ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन करनी है? 0 0 1 0 0 1 1. So now write the output. 0 into 0 0 and invert of that 1. 1. For this also 1 1 0 1 and this is 1 into 1 0 1 and invert 0. of that 0. So this is your NAND gate truth table. तो switches के साथ implement करना है तो कैसा combination होगा? तो हमें पता है AND के लिए switches are in series. बट नॉट के लिए दैट स्विच शुड बी इन पैरेलल. तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है इस तरह से कनेक्ट कर देंगे ए एंड बी. नाउ यू कैन चेक व्हेन बोथ आर 0 0 or when both are open current will flow from here. When any one is closed, agar b closed hai then also path will not complete, led will glow. Same for 1 0 1 closed hai 0 open hai then also led will glow. And 1 1 hai तब दोनों क्लोज हो जाएंगे एंड द करंट विल फ्लो. क्लियर? So this is about NAND gate. And the last gate is third, that is XOR gate, exclusive OR gate. Understood? Exclusive OR gate के लिए first I will define the definition. I will tell the definition, then you will understand. XOR gate is basically how you will define that when you have odd number of ones in the input. When you have odd numbers of ones, जैसे A and B, you are writing for two input. 1 minute, इसका symbol भी लिख लो. And का symbol same बनाना है. आइसक्रीम बनाया and then not का bubble. So this is your and का symbol. Now for the XOR gate 0 0 1 1. So this is your कॉमा पेश थोड़ा सा नीचे कर सकते 0 हैं 1 0 1 1 minute. 0 1 0 1 2 zeros 1. This is XOR gate. तो आउटपुट जो है वो कैसे लिखना है? You have to see number of ones. When it is odd, then output is high. तो 0 0 में तो 1 है ही नहीं, तो this will be 0. इसमें कितने ones हैं? एक ही 1 है, ठीक है ना? This one. So this is odd number, so here it is high. And for 1 0 एक ही 1 है, तो here output is high. और 1 1 है, two ones हैं, तो it is even number, so this is 0. So this is basically the definition of XOR gate. When you have odd number of ones, output is high. But जब आप two input के लिए लिखते हो ना, तो एक different definition भी बनती है कि when you have same inputs, output is low, and when you have different inputs, output is high. तो two input के लिए it is valid. टू इनपुट गेट है, इसका जो सिंबल है वो सेम ही है, और का सिंबल बनाया और एक साथ में ये लाइन बनाई. तो दिस इज योर एक्सॉर गेट. एंड और कैसे लिखते थे? a प्लस बी, तो इसको इनसर्कल करना है. तो दिस इज a एक्सॉर b, बट इट हैज द इक्वेशन आल्सो. दिस इज नॉट इक्वेशन. इक्वेशन आई विल टेल यू कैसे बनानी है. नाउ यू अंडरस्टूड. XOR की you have two definition. Two input के लिए you can write that when you have same inputs, output is low. When you have different input, output is high. और second definition क्या है? When you have odd number of ones, then output is high. तो वो आप किसी भी input के लिए, अगर आपका गेट 3 input और गेट होता, XOR गेट होता, A, B, C, तो how you will write?
तो उसके लिए आपको 3 इनपुट का ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो 0 1 0 1 आपने 0 1 फर्स्ट 0। डेफिनेशन क्या बोला था? हाँ, डिफरेंट नंबर ऑफ when you आउटपुट have होगा तो different number of inputs, ये 0 1 है, ये 1 0 है, तो output is high. When you have same input, 0 0 है, 1 1 है, output is low. और दूसरी डेफिनेशन क्या बताया कि when you have odd number नंबर ऑफ of वन। ones, तो हम वो वैलिड हो जाता है, वो 2 इनपुट के साथ ही वैलिड है कि जब सेम इनपुट है आउटपुट इज लो, डिफरेंट इनपुट है आउटपुट इज हाई. But when you have more than 2 inputs, then you have to see with odd number of ones. तो मैं वो भी करके दिखाती हूँ. That is also your topic. 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 3 4 1 1 1 1. तो अभी आप इसमें देखो आउटपुट के लिए A XOR B XOR C इस तरह से इक्वेशन बना. तो अब आप देखो इसमें ये 0 है, इसमें ऑड है 1, तो दिस इज 1. यहाँ पर भी ऑड है, दिस इज ऑल्सो 1. हियर यू हैव 2 ones, तो इवन नंबर हो गया 0. हियर अगेन यू हैव ऑड 1. हियर यू हैव इवन नंबर ऑफ ones, तो 0. हियर ऑल्सो यू हैव इवन नंबर ऑफ ones, 0. एंड यू हैव ऑड नंबर ऑफ ones, दिस इज हाई. ठीक है, तो हम इसको एक्सॉर गेट को ऑड पैरिटी चेकर बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन. ये देखो एडिशन में यूज होगा. अभी एडिशन बताया था ना, 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 और 1 + 1 10 होता है 0. तो जो सम पार्ट है दैट वी कैन इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सॉर गेट. So this is another application of XOR gate, that we can design adder circuits with the help of XOR gate. And second application, it can be used as odd parity checker. Now what is parity? Parity is basically a bit which will we are using for during transmission. जैसे मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है, जैसे अभी मुझे ये 3 बिट ही ट्रांसमिट करना है, लाइक 0 1 1. दिस नंबर आई एम ट्रांसमिटिंग. तो इसके साथ along with I will put a parity. Parity means इसमें कितने number of ones है, इसमें कितने number of ones है 2. तो I will put XOR parity और I will put here. क्यों XOR parity ये 0 होगी? क्योंकि XOR गेट कैसे वर्क करता है कि जब इसमें even number of ones होंगे तो ये आउटपुट इसका लो होगा. तो जब ये ट्रांसमिट करूंगी, व्हेन आई विल ट्रांसमिट, तो रिसीवर पे आई विल गेट 0 1 1 एंड विद द सेम पैरिटी. अगर पैरिटी चेंज हो जाती है तो इट इज शोइंग दैट यू विल नॉट गेट सेम नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ वंस. तो सम एरर इज देयर इन योर ट्रांसमिशन. तो वी हैव एरर डिटेक्शन सर्किट जहाँ पे हम ये ऑड पैरिटी चेकर यूज करते हैं. एंड आफ्टरवर्ड्स एरर करेक्शन सर्किट्स आर आल्सो देयर. सी 0 1 0 की जगह 1 0 1 भी तो ट्रांसमिशन के टाइम गड़बड़ हो सकती है. तो यहाँ पर वी विल चेक पोजीशंस आल्सो कि किस पोजीशन पे 0 है, किस पोजीशन पे 1 है. फॉर दैट वी हैव डिफरेंट सर्किट्स. बट XOR को क्यों, XOR को we can use it as odd parity checker. Odd क्यों? Because it is high only when you have odd number of ones. तो अगर आप 0 1 1 भेज रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, तो पैरिटी में कौन सी बिट जाएगी? 0. और रिसीवर पे भी इट शुड बी 0, देन द ट्रांसमिशन इज करेक्ट. तो XOR की very important और very first application is it can be used as odd parity checker. Okay. Now अभी ये जो मैंने बोला था कि this is not equation. Equation हम derive करेंगे with the help of truth table. Truth table से हम equation derive करते हैं इसकी. तो equation इसकी कैसे बनती है? ये इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, आगे भी थोड़ा सा यूज होगा. SOP लिखना है आपको, सम ऑफ प्रोडक्ट्स. यू नीड टू राइट सम ऑफ प्रोडक्ट हियर. तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है कि जहाँ जहाँ हाई है उसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं. प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे? व्हेन इट विल बी हाई, जब ये दोनों हाई होंगे ना, A इंटू बी लिखना है, प्रोडक्ट्स बनाना है. तो ये प्रोडक्ट हाई कब होगा? ये तो 0 है एंड दिस इज 1, तो 0 इंटू 1 दिस विल बी 0. तो वी कैन मेक इट बाय राइटिंग इट्स A बार B. A बार B लिख सकते हैं ना इसको.
तो ये क्या हो जाएगा, ए का बार 0 का 1 into 1, देन इट विल बी हाई। ऐसे ही हाई और कहाँ पर है, इधर। तो इसका टर्म कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी बार। तो जहाँ 0 है उसको हमने बी बार कर दिया। ओके, और अब 1 यहाँ पे है, इधर दिस और दिस एंट्री विल बी वैलिड फॉर हाई आउटपुट। तो दिस और दिस, तो मतलब y इज इक्वल्स टू a बार b प्लस ए बी बार। तो दिस इज योर लॉजिकल इक्वेशन ऑफ XOR गेट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट, एक POS भी आता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, वो अभी हम नहीं लिख रहे, दैट इज योर इंजीनियरिंग सिलेबस। तो SOP इज योर सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनाने हैं, तो जहां जहां हाई है देयर यू हैव टू सी, देयर यू हैव टू, इसको हम मेन टर्म्स बोलते हैं। तो देयर यू हैव टू सी क्या कैसे इसको हाई बना सकते हैं, जब ये दोनों का प्रोडक्ट हो। और इन दोनों का प्रोडक्ट हाई कैसे बनेगा, व्हेन यू इन्वर्ट दिस। तो हाउ यू विल इन्वर्ट, बाय यूजिंग इन्वर्टर। तो ए बार बी, ए बी बार। ओके, अंडरस्टूड। तो मैं यहीं पे इसको फिनिश कर रही हूँ, बिकॉज मीटिंग एंड होने वाली